Thank you very much, Ashishji. Jai Bhim, Namo Buddhaya. First of all, let me uh, pay my homage to R.L. Chandapuri ji because मुझे when I first came to your function in Lucknow, if you remember, um, Chandapuri ji was there, and I think when I spoke over there, and he was the first man to give me a thump on the back and said, "Well said and well done," and your participation will ignite as an NRI ignite the uh, movement of SESG OBCs for their rights. Uh, so he gave me a couple of books as well. Without going much into, because your subject, your whole questioning has a very big uh, answering, but I don't know whether I can answer everything in 10-15 minutes. Um, I left India in 1964 when I was studying engineering in Fagwada, and since then I never returned to India as a that I will earn some money or I will get some economic empowerment and then come back to there, but I didn't go back. Um, Now, when I came into UK, that was the first time I came across that who is Ambedkar and who is what's his contribution to toward my empowerment, my rights, and my development. Um, so from there on, I started studying Babasaheb Ambedkar, and I studied very, very deeply Babasaheb Ambedkar. And one thing I could understand the whole the struggle of Babasaheb Ambedkar and the whole struggle of Manubad against him was based on the only one thing, that is economics, control of economics. So Babasaheb Ambedkar was trying to ask us or give us the rights so we can have some opportunity to share the economics or participate in the economics. But Brahmins was not prepared to give it that. And that struggle and that fight has been going on ever since from then. Now I came into business by accidentally because I was studying also UK also as an engineer, but with the Boeing's and Boeing, wrapped up their concern from UK and went to America and asked, left us orphaned in UK. So we was two engineers. So we thought what to do, doing a little bit various jobs here and there. Then we came to this opportunity that why don't we start a small scale business. Now, I hardly knew anything about the business. My family, my heritage from anybody from my family never ever even heard of business, as you probably will understand. So, how to proceed in business? Business was not my subject. I didn't study business, and I'm not a MBA or I'm not a MA in all sort of these degrees in. So, how to succeed? Now, in Britain, there was one consolation came that Britain was moving toward the multicultural, multi-faith, multiracial, and multi-languages. All this came as a surprise to us that once upon a time when the Britishers was looking at us that we are their slaves of their empire in India, now they are seeking that we need to give them the opportunity, we need to bring them forward and breathe. Even if we have to lower our standard a little bit, we have to accommodate a lot of our other races into our economy because they lost so much, in the Second World War, and they wanted to recover that. So they gave us the uh, all this opportunity to expand our education. You can work 3 days. You can learn 3 days. From there on, we took up all this that even with the little knowledge of business, when I stepped into the business,
And I asked the person who I took up my business from, I asked him that, uh, sir, could you please, before you hand over me the business and before you go away, could you please tell me that you have run this business successfully 45 years? What are the actually rules you followed which kept you kept you successful? Because I was looking around my shoulders. The failure is just around the corner because I have never ever experienced what is business. So he told me few things. Two things which I will share with you. Two things he said to me, that whenever you are going to uh, control the business and set up the business, take oath on your the business, that you will never drink while you drive, and you will never drink while you are sitting on the counter of your business. Because when people will look at you and smell from you, people will not send their daughters, their bahus, their wives, and their mothers to your shop. And I felt that is a very good advice. Secondly, he said, you are one person running the whole business. You have to go various places to buy your product, and you need your license. To keep your license safe, you have to give up drinking. And I think from that uh, concept I took that, okay, आशीष जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई हैव 9.5 years of that store I run, but I sold tons of meat. I have sold tons of wines, beers, and whiskeys, but I have never drunk any. So, and also, I I never ever deprived my children's, my wife from it. I said, you can do it, whatever you, but I will not drink until my feet are so uh, strongly planted into this that a small failure here and there will not knock me out. So this is how I became in a business. And then he said to me another thing, that as you will move in the business will teach you what to do best, what to do more better, more better, and you will improve yourself. And the same thing happened. I launched many products. Some of them failed, some of them uh, I succeeded. And my products, if they was marketable with the market price, if they are uh, appreciate of their quality, and they are nicely priced, doesn't matter how far peoples are staying from me, they will come to me. Even the peoples who of other castes, who was thumping their chest that they are high caste, even they was forced to come to me to buy those products, because there was no compatible product available in the whole town. So this is something I succeeded because I learned from it. And then after that, I moved into London. And London, I was the first person in the West End. West End is just like um, आपके ये क्या है दिल्ली में, कनॉट प्लेस। Connect please. जैसे कनॉट प्लेस है, ऐसा वो एक सेंटर है जिसमें मैं पहला एक शेड्यूल कास्ट सेंटर हुआ। देखने में मैं और मेरी बीवी अच्छे थे, तो कोई पूछता नहीं था कि भी तू किस कास्ट का है। Okay. बातचीत भी अच्छी करते थे, पढ़े लिखे थे। तो Yeah. आई मूव्ड इन देयर। लेकिन उसमें भी मुझे यही यही एक जो सिंसियर उसने एडवाइस दी थी, कि यू हैव टू फाइंड ए प्रोडक्ट which you can market with the price or with the quality and compatibility in the whole market, then you will succeed. And I followed that advice there as well, and I succeeded there. uh, Unfortunately, when I was working in the centenary in 1988, we decided that we are going to have a celebrate Baba Saheb Ambedkar centenary in a very big way.
And that time, the boss, I had two showrooms in the West End, and Saturday became the day we have to launch Baba Saheb Ambedkar centenary in British Parliament, and I decided I was so much intaken by the struggle and Baba Sahib's contribution toward my empowerment, my development, and my families. Because when I look at two, three generations back, and when I look now two generations which have come up in England, so the distance is जमीन आसमान का जैसे कहते हैं ना फर्क है it is widely unconceivable. So we decided that I'm going to shut my both showrooms and participate in Baba Saheb Ambedkar in the British Parliament, launch the British Parliament. And that is when the first time lot of people came to know that I belong to a scheduled caste. Varna, I controlled myself in such a way that nobody have dared ever to ask me who you are and where you come from. Now, this is the price I paid because I didn't wanted to keep myself filled with the um, um, this ignorance or this inferiority complex that oh I'm a scheduled caste. If somebody will know it, and they will probably will not participate with me, they will not accept me. I wanted to come out of that shell and compete as a equal footing, that I have a product, I have a price for it, it's a marketable, you come and buy from me. If you if you can buy from Right, sir. anywhere, Right. you buy it, otherwise you buy from me. Yeah, So yeah, definitely. I came out of that shell and I competed on the same footing. Many people didn't like it, many people liked it, but I succeeded in that way. And since then, I started coming into India, and I joined the Bomb Chef, as you know, as well. And my job was to educate my people that don't ever only seek for government jobs. Government jobs not going to last forever. And teach your children's, educate your children's, and give them a opportunity to open other avenues. Go for small scale business, go for small scale industry, go small where you can earn your own independence like I have earned. You don't have to be very highly educated into it, because any field which you move in, the field will tell you how far you can walk and how fast you can walk. So that is how I come. That is I have been starting. I had 10 years. My office was in Bikaji Kama Place, and I tried my best to even educate many peoples and also bring them into the this business. But I could not find any suitable, trustworthy peoples to extend my business. So I remained unsuccessful in that. But because two things I will say today is instead of we should control trade and industry or economics. I think even if we are allowed in India to participate in it on the equal footing, on the equal opportunities, I think we can find our own space. But unfortunately, what I see in the last few years in India, uh, the space is shrinking so fast and opportunities are snatched from you on every you know sphere, that there is hardly little room left for maneuvering. So from that little room, we have to find our strength. We have to come together. If we cannot succeed one, we have to come together two. If we cannot succeed two, we have to be three, we have to be four. We have to come together and we have to generate our own economy, because the Right. whole impact of Brahmanism on us is to control our economy. Right. This caste system, this religion, their supremacy, their
All this is connected with the only controlling our economics. If they keep us poor, they can control us. If they Right. cannot keep us poor, then they will lose it. This Right. is the scenario which Right. is today. Even the BJP is understanding it, and is they fearing it. That's why they are plugging every hole where we can, escape. Right, So sir. my Sir, I my will. Sir, let me I just my let want my to conclude say. here. Yeah. Yeah. I'm just going to finish it. My We credit sincere the advice to the data my reporter. children, my Yes, sir. sincere Please go advice, ahead. my sincere advice to all my peoples are who are back in India, that you can do it. If you have to make some sacrifice to come together and to make a success, sacrifice a lot of nonsense, lot of this custom traditions, and this yatra, that yatra, this puja, that puja. Shed everything and just control your whatever you have, control that, and invest into the future of your children, and make them give them a space to move into this business, or little bit space in the economy. And I'm hopeful, very hopeful, that we will succeed. My wife is Ashish ji saying you. आशीष जी, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास तो कोई ज़्यादा डाटा नहीं है कि भाई इकोनॉमी में कितनी हमारी पार्टिसिपेशन है या जॉब्स में कितनी हमारी पार्टिसिपेशंस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने जीवन में दो जो स्लेवरीज की मूवमेंट थी, उनको मैंने बहुत क्लोजली देखा है। एक है साउथ अफ्रीका की, जो पार्टाइट था, और सेकेंडली जो अमेरिका का। उन दोनों में हम देखेंगे कि भाई हमारे पास उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, वो जीरो से लड़ाई लड़ी, और जीरो से लड़ाई एक मूवमेंट में लड़ते चले आए, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम टू टाइम अपने अधिकार लिए और उन अधिकारों को डेवलप किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे लोग हैं, इन्होंने कोई मूवमेंट तो चलाई नहीं, इनको घर बैठे ही सारे अधिकार मिल गए। इसलिए जिन लोगों को अधिकार मिले, जिनको एजुकेशन मिली, जिनको एजुकेशन मिलने के बाद अच्छी अच्छी जॉब्स मिली, और उनके पास अच्छा भला पैसा आया, लेकिन पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा खर्चना कैसे है, कहाँ खर्चना है। उन्होंने एक ही प्रदर्शन किया कि वो बहुत बड़े घर बना लिए, बहुत बड़े बंगलो बना लिए, फार्म हाउस ले लिए, पैसा ऐसी जगह पे खर्चा जहां से नॉन प्रोडक्टिव रहा। अगर वो लोग ये समझते कि भाई इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी एजुकेशन के तरीके से ही करते कि भाई हम अब रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होकर हम अपने बच्चों को गाइड करेंगे कि कैसे कैसे वो ऐसी ऐसी जॉब्स के ऊपर आ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। वो मुझे मुझे जो दिखाई देता है, वो एक न्यू ब्राह्मण ब्रीड हमारे अंदर के पढ़े लिखे लोगों के बीच में चालू हो गई, और उस न्यू बॉर्न ब्रीड ने जो काम उनको करने चाहिए थे, जो अधिकार उनको मिले थे, उनको अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने बच्चों के लिए एक नया रास्ता बना के जाते, तो आज हमें ये दिक्कत नहीं आती। आज भी मैं देख रहा हूँ, आज तो खैर समस्या ही बहुत बड़ी गंभीर हो गई है, बिकॉज ना तो हमारे पास लैंड है, ना हमारे पास जॉब्स हैं, ना हमारे पास डिसेंट एजुकेशन है। 1-2% को वो पढ़ा के ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम दूसरे लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी दुनिया में स्ट्रगल किए हैं, उन्हीं लोगों के बीच में से ही सन्स एंड डॉटर्स पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं। मुझे आज भी उम्मीद है कि जो लोग भी आज ये सोच रहे हैं कि भाई हमने अपने बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एक रास्ता छोड़ना है, बहुत बढ़िया एक इकोनॉमी छोड़नी है, जिसमें उनको स्पेस मिल सके, जिसमें उनको कम से कम खुद जो बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल सिस्टम में वो धंसते जा रहे हैं, उनको उसमें से निकलना पड़ेगा। दे हैव टू डिसाइड वेदर के
आपको रोटी चाहिए और रोटी भी फेंकी हुई चाहिए, आप उठा के खा लेंगे जिंदा रहने के लिए, जहां आप अपनी अंदर की आदमियत को जिंदा रखेंगे, आप अपने मान सम्मान को जिंदा रखेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन मैं नीचे फेंकी हुई रोटी उठा के नहीं खाऊंगा। ये जब तक आपके अंदर जो तलख पैदा नहीं होती, जिद पैदा नहीं होती, जी सर। तो आप अगर एक स्टैंड लेगा तो उसके साथ दूसरा लड़ेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, तो हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। राइट। दुनिया में दो तरीके से कंट्रोल करी जाती है गवर्नमेंट। एक तो आप गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं उसमें भागीदारी लेकर, उसमें हिस्सादारी लेकर। दूसरा, आप गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप तैयार करके, जो आपको एक इंच भी हिलने नहीं देगा लेफ्ट एंड राइट। आपको डिक्टेट करेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सारी क्या कहते हैं प्लानिंग है, इसके विपरीत में हम प्रोटेस्ट ना करें, इसको हम पैरालाइज करने की कोशिश ना करें, तो यू हैव टू कम टू द डिक्टेशन ऑफ अवर्स। ये प्रेशर ग्रुप, ना तो हमने कोई डिसेंट प्रेशर ग्रुप बनाया, ना ही हमने कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ली। उन्होंने जो हमें समा मिल गया वो भी मुझे लगता है कि एक एक्सीडेंटली मिल गया, कि ब्राह्मणों को पता नहीं था कि भाई हम 2-3-4 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे यूपी के। जैसे ही उनको अनुभव हुआ कि ये पॉलिटिकल पावर जो है इनके लिए क्या कर सकते हैं, वैसे ही उन्होंने उसके ऊपर कैप कर दिया। और आज हमें जो कुछ भी हमारे पास है, मैंने ये कहता बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ है आज भी हमारे पास। जो कुछ भी हमारे पास है उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। ब्राह्मणों की तरह दूसरों को, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं करने चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े जो दिखावे नहीं करने चाहिए। हमें वी हैव टू कम टू द बेसिक ग्राउंड, और ग्राउंड पे चलते हुए हम कैसे उसमें से रास्ता निकालेंगे। जब तक लोग इस रास्ते पे नहीं उतरेंगे और नहीं इसको संभालेंगे, तो हम खामखा दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहेंगे जी। जिसको मैंने पहले भी कहा था कि ब्राह्मण का सारा कंट्रोल इकोनॉमी पे है, वो सारा जिंदा है, इकोनॉमी उसकी ऑक्सीजन है। लेकिन हमारे से इकोनॉमी छीनती जा रही है, हमारी इकोनॉमी हमारी गुलामी बनती जा रही है। अगर इस गुलामी को नहीं हमारे लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर हावी होने देना, तो हमें इसके ऊपर सीरियसली विचार करना होगा। आपके पास समय बहुत कम था, बहुत सी और चीजें हैं जो बीच में लाई जा सकती थी, कही जा सकती थी, लेकिन 10-15 मिनट में आप कुछ ज्यादा टॉपिक को छेड़ नहीं सकते। बहुत सी चीजें हैं जो हम इकट्ठे होकर कर सकते हैं। आज भी मैं सोचता हूँ कि मेरे लोग जो भी सुनते हैं, जहाँ जो भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जो कुछ भी आपके पास, आपकी पॉकेट में 10 रुपए है तो उस 10 रुपए के अंदर ही जीना सीखो। कर्जा मत लो, अपने बच्चों का फ्यूचर मत स्टेक पे लगाओ। तो आप उसी 10 रुपए में जीना सीखोगे डेली, तो आपको रास्ता मिलेगा कि भाई आज मैं 10 रुपए में सीता हूँ, कल को मुझे 12 मिलने होगा, तो 2 रुपए में एक्स्ट्रा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ लगाऊं। अगर आप ऐसा एक ग्रुप बनाओगे तो दूसरा ग्रुप आपको साथ देने के लिए आ जाएगा। ऐसे ही दुनिया में हुआ है, ऐसे ही अफ्रीका में हुआ, ऐसे ही अमेरिका में हुआ। दोनों ही लोगों ने जो कुछ भी उनके पास था, आप तो, हमारी तो कंडीशन बहुत अच्छी है आज, लेकिन अगर आप जो सबातो की कंडीशंस देखते, जहां उनको एक सेग्रीगेट करके एरिया में रखा जाता था, जहां कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, जहां कोई खाने पीने में हेल्थ का कोई एजुकेशन नहीं था, डिसेंट रहने का नहीं था, उसमें से भी नेल्सन मंडेला जैसा निकल आया। तो हम हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो निकल सकते हैं, लेकिन हमें उनको ट्रस्ट करना सीखना होगा, उनके पीछे खड़ा होना सीखना होगा, उनको बैकअप करना सीखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको 1 घंटे में नहीं 2-3 घंटे रखोगे तो जाकर। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।